Guys, welcome again. Today I am going to start Mechanical Machine Design 2. Myself MD Tariq Anwar. I am working as an assistant professor at St. Andrews Institute of Technology and Management, Gurugram. So, first of all, what is mechanical machine design? Mechanical machine design is nothing but you have to design machine component. For example, gears, shaft, axles, clutch, brakes, etc. So before that, you have to know the basic concept of mechanical design, machine design. Already explained in mechanical machine design 1, different types of joints such as riveted joint, bolted joints, cotter joints, knuckle joints, flywheel, etc. So in this subject or second part of mechanical machine design subject, I'll deal with oh, okay, basic concept of casting process, forging, machining process, and in the next unit, shaft, different types of shaft, static condition, bending condition, dynamic load condition, different types of springs such as helical springs, leaf springs, which are generally used in automobiles, trucks, buses, etc., and bikes. So, third unit focuses on bearings. There are two types of bearing, journal bearing and sliding contact bearings. I'll explain all the parts in details in one by one lecture series. So, last topic is or last unit you can say is the gears, different types of gear, helical gears, worm gears, and bevel gears, spiral gears, etc. So today I am going to start the first unit, that is the basic concept of mechanical machine design, that is ergonomics. What is ergonomics? Today's topic is introduction of casting process and ergonomics. So first we will discuss ergonomics. The word ergonomics comes from the Greek words ergos. Ergos means work, and nomos means law. Clear? It means that the work law, जब हम काम कर रहे हैं कहीं पे तो कुछ लॉ फॉलो होंगे, किस टाइप से हमको काम करना है इन द इंडस्ट्री, इन द प्लांट. क्लियर? So, thus, the science of ergonomics is the study of how the laws of nature. What is the laws of nature? For example, my hand movement, my leg movement, my eyesight, rotation, and so on, affect the worker and the work environment. Clear? Ergonomics means किस टाइप से हमारा हैंड काम कर रहा है, हमारा लेग मूव कर रहा है, किस टाइप से हम सिटिंग पोजीशन हमारी क्या है, ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ स्टैंडिंग पोजीशन क्या है. क्लियर? सो इट कम्स अंडर द वर्क लॉज. नाउ इट इज़ द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड देयर ऑक्यूपेशंस. किस टाइप का वर्कर है, किस टाइप का ऑक्यूपेशन उसका, इट पे डिपेंड करेगा. इक्विपमेंट पे एंड इन्वायरमेंट पे, किस इन्वायरमेंट में वर्कर काम कर रहा है. करेंट मार्केट डिमांड्स रिक्वायर वर्कर्स टू वर्क स्मार्टर इंस्टेड ऑफ हार्डर. मीन्स दैट हमको काम किस टाइप से करना है, स्मार्टर वे में, नॉट ए हार्डर वर्क. इट मीन्स comfortable work zone should be available for worker. Clear? Implementing ergonomics in the workplace is one of the best ways to minimize the on-job stress and strain. अगर हम अनकम्फर्टेबल में काम करेंगे तो ज़्यादा देर तक काम नहीं कर सकते. क्लियर? सो
workplace should be comfortable for workers and personnel. Now, thus ergonomics stand for preventive maintenance and safety engineering. It comprises two parts. प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में स्टार्टिंग से हम जो है प्रिवेंशन लेके चलेंगे, इस टाइप से काम करना है तो मेंटेनेंस क्या रहेगा, बेटर रहेगा. it will not be hazardous for workers and equipments. And safety engineering, इन सेफ्टी प्रिकॉशंस लेके चलेंगे हम. सो दिस इज नोन एज ergonomics definitions. Clear? So now, if poor ergonomics condition can cause cumulative trauma disorders. Clear? अगर ergonomics को आप रूल फॉलो नहीं करेंगे, नोमोज मीन्स लॉ, अर्गो मीन्स वर्क लॉ हम फॉलो नहीं करेंगे at different plants and at different manufacturing units, what will be the effect? Injuries and illness that affects muscles, tendons, nerves and blood vessels such as carpal tunnel syndrome and lower back pain. I'll explain what is this. इंजरीज अकर हो जाएंगे, इलनेस होगा, बीमार पड़ जाएंगे, मसल्स, टेंडन्स, नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स क्या होगा, खींच जाएंगे, such as carpal tunnel syndrome. What is this? Generally symptoms of pain in hands and arms due to, or you can say with numbness or tingling. These are known as carpal tunnel syndrome. This is treated by health professionals. So you have to consult doctors for this. So it is better to use preventive maintenance or safety, or you can say ergonomics should be followed in all plant during designing, during machining, during production and so on. And lower back pains. Lower back pains means agar sitting position is not good, so you have to face lower back pain. I'll explain one diagram here. See this diagram. Clear? I am showing. See the left side diagram, that is position is not good because angle side and bent position of back pain, or you can say back pain. There is no handle in the chair or on the chair to put a hand on it. So I have made cross sign, means this is not good ergonomics, wrong sitting positions. Now see another diagram which is tick mark or with green marks. Right tick. This is the correct position, hand on the handles and back position is straight. Another diagram is showing standing, correct standing position. Clear? So these are the effect of ergonomics. Now we will discuss value engineering. What is value engineering? Value engineering is determining the amount of value added to the organization by each job and unit. Means that you have to add value. Value means क्या है? Product should be good, aesthetic look will be better, and value of the project means cost, how much cost you are paying or how much value the product is giving you back. This is known as value. So value engineering comprises value engineering, interface design, design किस टाइप का है, ergonomics, it also comprises ergonomics and preventive maintenance and safety engineering. Now last point of ergonomics is the nature of the work, the worker and the workplace play significant roles in maintaining a value engineering thrust. वैल्यू इंजीनियरिंग को कौन बढ़ाएगा, नेचर ऑफ वर्क किस टाइप का है, द वर्कर एंड द वर्क प्लेस, ये ऑल मिल करके क्या करेंगे,
वैल्यू इंजीनियरिंग को इंक्रीज करेंगे। क्लियर? पीपल इन इंडस्ट्री सी इट एज ए फैंसी टर्म ऑफ कॉस्ट रिडक्शन, मीन्स दैट जितना हमारा क्या होगा, हमको बेटर इन्वायरमेंट मिलेगा, उतना अच्छे से काम होगा, बेटर वे में वर्क होगा, तो क्या होगा, कॉस्ट रिड्यूस होगा, पर्सोनल क्या होंगे, बेड कंडीशन में होंगे, एर्गोनॉमिक्स वैल्यूज़ फॉलो होंगे, एर्गोनॉमिक्स रूल्स फॉलो होंगे, सॉरी। सो क्या होगा, व्हाट विल बी द इफेक्ट, देयर विल बी ए बेटर condition for workers. So first is idea, next is selling the part and product, approval from the manager point, and the settlement. अगर कोई wrong thing है तो उसको settlement. Last point of this part, engineering and manufacturing personnel brainstorm. What is brainstorming? Brainstorming, the spontaneous discussion for taking a new ideas of any problem to solve these problems. A spontaneous holding a meeting, this is known as brainstorming. बुला लिया, डिस्कशन कर लिया, क्या है, किस टाइप से है. सो each and every person give you ideas, different ideas, and after that you can implement these ideas in your plant or in your manufacturing unit. This is known as brainstorming or brainstorm. So engineering and manufacturing personnel brainstorm ways to redesign the parts. किस टाइप से हम पार्ट को रीडिज़ाइन करेंगे, प्रोडक्ट्स को, प्रोसेस क्या होना चाहिए, सर्विसेज किस टाइप्स के होने चाहिए, एट्सेट्रा. So these are the brainstorming parts. Now value engineering, I'll explain again. Design and production engineers work together to accomplish designated goals. What do you mean? Design engineer is different person and production engineer is different person. So दोनों साथ में मिलके काम करेंगे तो क्या होगा? It will accomplish designated goals of the company. Clear? Now value engineering is driven by customer needs and requirements. कैसे कैसे वैल्यू ऐड करेंगे? जिस टाइप से कस्टमर का रिक्वायरमेंट्स आएगा, जिस तरह कस्टमर का नीड्स आएगा, उसके हिसाब से हम प्रोडक्ट को चेंज करेंगे एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट्स. दिस इज नोन एज वैल्यू इंजीनियरिंग. मीन्स दैट वैल्यू एडेड करते जाएंगे. फॉर एग्जांपल, इनिशियली मोबाइल फोन्स वाज very small and with antenna and something. Now today I am using Android phones with large screens. So as per customer requirements, mobile company or companies have changed their design, their software, internal softwares, and battery backups and etc. So as the customers requirement increases, value of the project or value will increase of that project. Now we'll shift casting introduction. What do you mean by casting? You have read or you have heard about the casting process in second semester, that is manufacturing technology 1, but I am introducing again because it will be useful for your exam points of view and it will remind you the last topic which I have covered in the class. So metal casting fundamentals. What do you mean by casting? Definition of casting is pouring materials or pouring metals in liquid form into a mold. What is mold? Mold is nothing but a cavity where the mold has the shape of the part to be manufactured. For example, you have to make a box. So you have to create a mold cavity in the sand equal the dimension of the box. Clear? So putting or pouring the molten metal inside the sand mold, after some time it will solidify. So after solidification
you can break the mold because it is the sand mold. So you will get the cuboid or cube shape of this type, और जिस टाइप का शेप तुमको चाहिए you can obtain with the help of mold cavity. So 3 steps involved in the casting process: pouring of liquid material into mold first, second one is allowing it to solidify, third one is removing the part from the mold after breaking the mold. But just like cake making प्रोसेस क्या है, पहले हम मटेरियल्स तैयार करते हैं, उसको हम केक के कंटेनर में पोर्ट कर देते हैं, फिर उसको बेक करते हैं, बेक करने के बाद उसको क्या करते हैं, रिमूव कर लेते हैं. Similar is the case for casting. Molten metal will be poured into the mold cavity. Give some time to solidify. After that, take that solidified metals or solidified shape of that shape which you are wanting. So it will give you casting process. Now, metal casting fundamentals. Melting a solidification temperature. What is melting or solidification temperature? For a given metal, the melting or freezing temperature is clearly defined. Pure metal के लिए क्या है? Melting temperature or freezing temperature is clearly defined, which value is fixed. But for an alloy, solidification begins once temperature drops below TL. TL is representing the liquidus line के नीचे जैसे जाएगा ये solidify start होगा, and is complete when temperature reaches TS. Clear? The solidus line, the solidus. Now see this diagram. I am zooming. When the metal solidify, there are 3 shapes here. Initially there is chill zone, for example, which is direct contact with the air or with the water, that is quenching medium. This is the chill zone. So outer layer is chill zone. This is the नीचे, ये क्या है उसका front view. This is the top view of this object which are solidifying. Inside chill zone there is a columnar zone, or you can say column zone. तो जो metals का shape है वो क्या है, column के shape. Next diagram, B part, equi-x zone मीन्स जितने मेटल्स हैं वो एक ही डायरेक्शन के बना रहे हैं. इक्वी मतलब इक्वल, एक्स मतलब एक ही डायरेक्शन. तो सी दिस डायग्राम अगेन नीचे, एक्सेप्ट मिडल पार्ट, राइट एंड सी द लेफ्ट एंड राइट साइड पार्ट. So these are equi-x zone. Now see the third diagram, equi-x structure. जितने टोटल जो मटेरियल्स के स्ट्रक्चर है वो क्या है, एक ही टाइप के हैं, इक्वी-एक्स्ड. तो ये ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन क्या है, डिफरेंट रेट ऑफ सॉलिडिफिकेशन और कूलिंग की वजह से क्या होता है, डिफरेंट शेप ऑफ स्ट्रक्चर विल एग्जिस्ट और विल फॉर्म. दिस इज नोन एज सॉलिडिफिकेशन, और ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन सॉलिडिफिकेशन टाइम, एंड during there will be a different structure. Some part is equi-x zone, some part is equi-x structure. Initially chilling, so outer layer will solidify first, then inner layer will solidify gradually. So this is the structure of during solidification. Now the structure of the solidified metals or alloy depends on its composition and on the cooling rate. Clear? Already explained किस टाइप से वो कूल हो रहा, कोई इंचिंग मीडियम यूज़ किया, ऑयल बाथ यूज़ किया, एयर में कूल हो रहा, उस पर डिपेंड करेगा ये. ठीक है, तो उस टाइप से स्ट्रक्चर वेरी मेटल्स का. द इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज दैट स्ट्रक्चर अफेक्ट द मैकेनिकल प्रॉपर्टी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जिस टाइप का स्ट्रक्चर होगा उस टाइप का मैकेनिकल प्रॉपर्टी होगा मेटल्स का. नाउ विल डिस्कस नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द फ्लूइडिटी ऑफ मोल्टन मेटल. व्हाट इज फ्लूइडिटी? फ्लूइडिटी मीन्स
After pouring inside the mold, the metal, how much distance it is covering inside the mold. One device which is used for finding out fluidity, और यू कैन से फ्लोएबिलिटी, कितना जो है फ्लूइड फ्लो हो रहा है, वो कहाँ तक रीच कर रहा है, नैरो पार्ट तक पहुँच पा रहा है, नहीं पहुँच पा रहा है, उससे पहले सॉलिडिफाई हो जा रहा. दिस इज नोन एज फ्लूइडिटी. So viscosity, first part is viscosity. What is viscosity? Honey is more viscous than water. Here two types of arrow. The honey is more viscous than water, increasing and decreasing arrow. Clear? As compared to water, honey is more viscous. Now surface tension, it also affects fluidity of metals. Viscosity also affect fluidity of metals पे. अगर ज़्यादा विस्कस है तो ये क्या होगा, फ्लूइडिटी कम होगी. सरफेस टेंशन अगर मोर है, हायर सरफेस टेंशन इज़ नॉट गुड फॉर फिलिंग इन शार्प कॉर्नर. फॉर एग्जांपल यू हैव टू मेक ए कॉम्प्लिकेटेड शेप विद द हेल्प ऑफ कास्टिंग प्रोसेस. तो शार्प कॉर्नर पे क्या होगा, अगर फ्लूइडिटी रेगुलर नहीं है, सरफेस टेंशन अगर ज़्यादा है, तो शार्प कॉर्नर तक मोल्टन मेटल विल नॉट रीच. क्लियर? Third part is third one is inclusions such as dirt, sand in ingots. For example, ingots क्या है? For example, solid cylinder ले लिया जिससे हम लेथ मशीन पे वर्क करते हैं, तो completely जो ingots हम we are getting, this is known as ingots after solidifying the molten metal. So if more inclusions are available or present, it means more viscosity and hence less fluidity. Inclusions क्या है? Dirt है, sand particles है, which are present in the molten metal. Due to this, viscosity will increase, hence it affects fluidity, so fluidity will decrease. Clear? So now note point is, the better the fluidity, the easier is to कास्ट द मेटल इनटू द मोल्ड. मतलब जितना अच्छा फ्लूइडिटी होगा उतना अच्छा मेटल को हम कास्टिंग प्रोसेस से मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और कास्टिंग प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं. नाउ कास्टिंग इश्यूज और यू कैन से कास्टिंग डिफेक्ट्स. क्लियर? आई विल एक्सप्लेन वन बाय वन. दैट इज व्हाट इज कास्टिंग इशू. डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स are found in casting process. Solidification takes time and it is directly proportional to C, or you can say proportional to C in the bracket volume upon surface area, V upon SA का whole square. It is the formula, but here I have written in the definition form. Solidification takes time proportional to C in the bracket volume upon surface area का whole square. C is a constant that depends on the mold and metal material as well as temperature. C क्या है? एक constant है जो डिपेंड करता है मोल्ड पर, किस टाइप का मोल्ड है, मेटल मटेरियल किस टाइप का है, एज वेल एज टेम्परेचर कितना है. सो दिस इज ड्यू टू दिस. फॉर एग्जांपल सी हियर द डायग्राम, 4 diagrams on the top of the page. For 5 seconds, this is the solidification of the molten metal. After 1 minute, solidification will increase. Clear? Similarly, after 2 minutes, it will also solidify more and more. मतलब inside the part of the object or inside the object will solidify gradually. After 6 minutes, it will solidify, and after 8 minutes and 10 minutes, it completely solidified state, in solidified state. So it means slowly or gradually it will solidify. So during this solidification there will be some defects which are occurring. So now we'll discuss these parts, but before that, what is shrinkage? Shrinkage happens with cooling. जब कूल होगा मेटल, अब मोल्टन मेटल, तो क्या होगा? श्रिंक करेगा. दिस इज नोन एज shrinkage. Next is defects. Surface discontinuities means जब solidify हो रहा है मेटल, सरफेस पे कुछ डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी. क्रैकिंग
and porosity. These are the defects in casting process. ये सब कहाँ से आता है? फ्रॉम श्रिंकेज, गैसेज और बोथ. पोरोसिटी कैसे आएगा? पोरोसिटी मीन्स existence of hole or pores inside the casting process or inside the cast object. Clear? Due to shrinkage, pores will occur or pores will come, and due to gases flow both sides, either outside to inside or inside to outside. Due to this pinholes porosity, it is known as pinhole porosity. इससे क्या होगा? गैस क्या होगा? बाहर की तरफ निकलेगा. ठीक है, सैंड से पास होते वो बाहर निकल जाएगा. तो क्या होगा? पिन होल पोरोसिटी प्रोड्यूस करेगा इनसाइड द कास्टिंग. सो हियर सी अनदर डायग्राम, दैट इज पोरोसिटी. आई हैव ड्रॉन a diagram here. Arrow is showing porosity. Porosity means hole is present inside the cast object. ठीक है. Chills and padding, another term which are used in casting. Chills means the part which supports, and chills and padding support the, for example, you have to made ring, a bell ring. Clear? घंटी. उसमें क्या होगा? You have to insert a core in the central part of the mold cavity. तो ये क्या करेगा? इसको सपोर्ट करेगा. तो चिल्स एंड पैडिंग वी आर जनरली यूज्ड. क्लियर? सो ड्यू टू दिस देयर विल बी सम डिफेक्ट. सो दिस इज नोन एज चिल्स एंड पैडिंग. नाउ see this diagram. I am zooming this diagram, zooming in. See the diagram. This is the basic process of casting process. क्या होता है? पहले there will be a pouring basin or pouring case from where molten metal is poured, a sprue from where metal is passing and reaching to the mold cavity with the help of runners. Here runner is the red in color, sprue is the light green, and you can say basin or pouring case, pouring cup, this is dark green color. In the center there is a core. For example, you have to make a hollow cylinder, you have to put a core in the middle of the cylindrical object. Metal is filling the outside area of the core. So after solidification you will get the hollow type of cylinder. This is the after solidification. This is known as casting. ये hot tears. Hot tears means क्या है? जब दो पार्ट ना मिल पाए, दिस इज नोन एज, वहाँ पे क्रैक टाइप का हॉट टीयर्स टाइप का शेप ऑब्जेक्ट जो है प्रोड्यूस हो जाता है. दिस इज नोन एज हॉट टीयर्स. अनदर पार्ट और अनदर डिफेक्ट्स इनसाइड द casting processes. See this diagram. I'll explaining again one by one. This is the surface of casting. Blow holes. Blow holes means क्या होगा? वहाँ पे होल प्रोड्यूस हो जाएगा. ठीक है. स्कार क्या है? वहाँ पे कुछ टाइप का स्कार एंड डर्ट एक टर्म होता है इन डिफेक्ट्स में. क्या हुआ? ड्यू टू सैंड पार्टिकल्स क्या हो, उसको पुश कर दिया, अंदर धंस गया. दिस इज नोन एज स्कार. ठीक है. क्लियर? एंड ब्लिस्टर में क्या होगा? कुछ पार्ट जो है वो छिलका टाइप, मतलब लेयर टाइप का क्या हो गया? मेटल्स का वहाँ पे आ गया. नीचे का मेटल्स खाली है, completely not filled. So this is known as blister. So these are the similar types of defects. I'll finish my topic here. I'll discuss next casting process such as forging, machining, shaping, something in another video lecture series. Bye guys. Okay.